This very esteemed event, which is known as India's largest conference for sugar and ethanol. My name is Honey Gill, and I welcome you all delightfully to MRN presents Regreen Excel Sugar and Ethanol India Conference 2023. Explore, Innovate, Sustain. Powered by KBK and co-powered by Dalmia Utsav. I hope everybody is feeling fresh this very fine afternoon. All of you had your lunch. Please raise your hands and tell me. They say that the occasion becomes a very hit event when the host and the audience, they get along, they gel up really well in the beginning. So please raise your hands and tell me, are you all feeling fine? We're good to start? Really great. Once again, a very, very warm welcome to the India's largest conference for sugar and ethanol 2023. Before we could start with anything, ladies and gentlemen, please help me welcoming and saying thanks to all our prestigious partners who have shown their very, very expensive and prestigious collaborations to make this conference successful. Our associate partners are National Sugar Institute India, National Federation of Cooperative Sugar Factories India, the Sugar Technologists Association of India, International Sugar Organization, Brazilian Sugar Industry Association Unica, UDO, National Union of Bioenergy Brazil, Bon Sucro, the Global Sugarcane Platform London, UK, Co-Generation Association of India, Maharashtra State Cooperative Sugar Factories Federation India, the Ethanol Manufacturers Association of India. The event is presented by MRN Murugan R. Nirani Group, Pride of Karnataka, MRN Group. Our title sponsor is Regreen Excel, Regreen Excel EPC India Private Limited. The event is powered by KBK, KBK Chem Engineering Private Limited, co-powered by Dalmia Utsav. Our exclusive partners for the conference, they are domestic trade partner Shri Balaji Sugar Company, port partner JSW Jaigarh Port Limited, digital trade partner eBuy Sugar, international trade partner Patil Retail Private Limited. Let us also say thanks to our platinum sponsors, True Alt Bioenergy Limited, Bharat Dalmia Sugar and Industries Limited, Kalabana Awade Jawahar Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Shri Shankar SSK Limited, Rajganga Biorefineries Private Limited, Jagdamba Engineers and Consultancy, Garuda Pumps Private Limited, Bhima Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Swaraj Green Power and Fuel Limited, the Uga Sugar Works Limited, Sahakar Shiromani Vasantrao Kale SSK Limited. Our gold sponsors are Shri Renuka Sugars Limited, Shri Gurudat Sugars Limited, Bio India Private Limited, Transgraph Consulting Private Limited, Geelong Thailand Co Limited, Can Group of Industries, Najmuddin Trading Company, Sadashiv Rao Mandlik SSK Limited, Fly India Express Private Limited, JK Enterprises, JK Sugars, Dhampur Bio-Organics Limited, Kundanmal Chaudhary. Our silver sponsors are Gautam Sugar Trading Company, Dr. Amin Controllers Private Limited, Shriji Process Engineering Works Limited, KS Commodities Private Limited, Prathamesh Intertrade, Castle Distributors Private Limited, Clean Earth Energy Solutions India Private Limited, Durga Sugar Private Limited, Garg Agencies, Atharv Intertrade Private Limited, LRCM Sugarcane LLP, Ashok Balaprasad Bhandari Transport Contractor and Railway, Hundkari, Om Shri Ganesh Transport, Privi Life Sciences Private Limited, SDG Logistics Park Limited, Investa Pumps Private Limited. Bronze sponsors are Trantor India Private Limited, CPR Industries Private Limited, Chemi Tech Process Equipments Private Limited, Shah Nathalal Hathibhai Sugar and Commodities, Kevi Sans Shipping Private Limited, Jaipur Rajasthan Transport Company, and Conturbo Tech Turbine Engineers, M. Khanna Road Lines. Thank you so much to all the sponsors once again.
Now, as everyone is here, please help me welcoming Miss Shivani Rai, who is the CBO of Chini Mandi, to kindly come at the podium and say a few words to start the conference. Thank you. Good afternoon, everyone. I hope you've had a nice lunch. It's pretty cold inside, but I'm sure you'll make it a sweet event. All of you sugar and ethanol people are here to build a stronger future. It's good to see you all. Last time we met 450 people. This time we're meeting 600. It's large, and I hope you have an enriching experience with us. All the best. Thank you. Thank you so much for creating that kind of momentum, Shivani. So this is India's largest sugar and ethanol conference for our nation. And this is 2023. My name is Honey Gill. So honey and the sugar and ethanol conference, there is a lot of sweetness in abundance overall. With this, ladies and gentlemen, now please help me inviting our esteemed dignitaries, eminent personalities to come on the dais and be seated. Let me please invite with a huge round of applause the founder, chairman, JK Group, Mr. Jitubhai Shah. A very, very warm welcome, sir. Please help me welcoming the managing director, MRN Group, Mr. Vijendra. Let us now invite Mr. Ashutosh Singh, who is the Director Projects, Regreen Excel. A warm welcome, sir. The Executive Director, Shri Renuka Sugars and MD KBK Chem, Mr. Vijendra Singh. The CEO, Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited, Mr. Pankaj Rastogi. MOS, Ministry of Panchayati Raj, Government of India, Mr. Kapil, Patil. We are so delighted to have you, sir. The Additional Secretary, Policy and FCI, DFPD, Mr. Subodh Kumar Singh. May I now request the founder chairman, JK Group, Mr. Jitubhai Shah, to felicitate our guest of honor, Mr. Kapil Patil, who is the MOS, Ministry of Panchayati Raj, Government of India, with a floral bouquet as a token of regard and respect. Sir, let us now present a floral bouquet to the Additional Secretary, Policy and FCI, DFPD, Mr. Subodh Kumar Singh. Let us now welcome the Director Projects, Regreen Excel, Mr. Ashutosh Singh. Moving forward, the Managing Director, MRN Group, Mr. Vijendra. Sir is not here. So, ED Shri Renuka Sugars and MD KBK Chemicals, Mr. Vijendra Singh.
the CEO, Dalmia Bharat Sugar Industries Limited, Mr. Pankaj Rastogi. Ladies and gentlemen, they say that to commence with any auspicious occasion, we always take the divine blessings from our Almighty. To do the same, we will conduct the lamp lighting ceremony. May I now request all the dignitaries to kindly move forward towards the lamp, and I'll also ask the other dignitaries to join us. Mr. Prakash Naiknawari from National Federation of Cooperative Sugar Factories, Dr. Dani, Technical Head, Sugar Division, VSI, Mr. Prakash Solanke, Vice Chairman, Sakhar Sangh, Mr. Pankaj Kasera, who is the co-founder, Chini Mandi, Mr. Gautam Shah and Mr. Vineet Shah, the co-founders, Chini Mandi, Mr. Dipesh Jakhar, the co-founder, Chini Mandi, Mr. Dave, Vice President, JSW, Mr. Tejas Gada, the Director from Patil. Ladies and gentlemen, to light the lamp, it's one of the biggest ceremony to start any occasion with. When we light the lamp, we bring in a lot of positivity, as fire is one of the sacred elements out of the 5 pure sacred elements of a planet or earth. So now we are bringing in a lot of positivity, joy, happiness in abundance. Thank you so much. Are going to be blissful. We are super sure because we have all of you. So before we could begin with anything, ladies and gentlemen, please put your hands together and let's welcome all of us. Wishing you all a very, very, very happy new year. Thank you so much. To start with, please help me inviting on the podium our guest of honor, the MOS, Ministry of Panchayati Raj, Government of India, Mr. Kapil Patil, to kindly come, say a few words, start this conference with his golden words. Thank you so much, sir. Over to you. शुगर और इथेनॉल के इस कॉन्फ्रेंस में
उद्घाटन समारोह के अवसर पर उपस्थित जितूभाई शाह, फाउंडर चेयरमैन जीके ग्रुप, विजय निरानी जी, एमडी एनआर ग्रुप, विजेंद्र सिंह जी, पंकज रस्तोगी जी, सुबोध कुमार सिंह जी, आशुतोष सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, इस कॉन्फ्रेंस में विश्व के अलग अलग देशों से आए हुए सभी डेलीगेट्स, हमारे देश के इस संगठन से जुड़े हुए सभी साथी, उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो अभी इसका इनॉग्रेशन कौन करने वाला था मुझे पता नहीं, अभी मैंने किया है कि क्या ये भी मुझे पता नहीं। फिर भी मैं डिक्लेयर करता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन हुआ, ऐसे मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे इस कॉन्फ्रेंस का मेहमान बन के आना है, ये मुझे कल तक पता नहीं था। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राव साहब दानवे जी, इनका फ़ोन मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी तरफ से आप वहाँ पे पहुँचिए, तो मैं यहाँ पे आज उपस्थित हूँ। मैं सही मेहमान हूँ क्या नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि आप शुगर के बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ और इथेनॉल के बारे में जानता नहीं। और आप शुगर पैदा करोगे तो उसको रखने के लिए जो गोडाउन है उसके बारे में मैं जानता हूँ। कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ भिवंडी में, विश्व में ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसका गोडाउन मेरे पास नहीं है, तो वो व्यवस्था मेरे पास है। लेकिन फिर भी ये आपकी कॉन्फ्रेंस है, आप लोग गए साल शायद मुंबई में मिले थे, ये सेकंड कॉन्फ्रेंस है ऐसा शाह जी ने मुझे बताया, आज दिल्ली में मिल रहे हो। कोई भी व्यवसाय हो, जब उसे हम करते हैं, जब शुरू में करते थे तो एक ही व्यवसाय के ऊपर, एक ही बिजनेस के ऊपर आदमी सही तरह से अपना कामकाज करता था। लेकिन दिन बदल गए, अभी किसानी भी करनी है तो उसके साथ अगर पोल्ट्री नहीं करेंगे तो किसान को भी उसकी किसानी करनी परवड़ती नहीं है। इसी तरह से पहले ऐसा माना जाता था कि किसानों के लिए शुगर फैक्ट्री बनाई, इसका मतलब ऐसा हो गया कि किसान भी सुखी हो गए और शुगर फैक्ट्री वाले भी सुखी हो गए। लेकिन बीच में ऐसी परिस्थिति आई कि दोनों में से कोई भी सुखी नहीं था, वो संघर्ष कर रहे थे अपना बिजनेस बचाने के लिए। किसान रेट कैसे ज़्यादा मिले इसके लिए संघर्ष कर रहा था, और कुछ भी सरकार की नीतियाँ जो बार बार बदलती रहती थी उसके वजह से भी कुछ नुकसान होते रहता था। तो मेरे समझ में जो बात आ रही है, मैं कई बार मेरे साथ हमारे सांगली के एमपी है संजय काका और राव साहब दानवे जी, ये दोनों बात करते तो मैं सुनता था, क्योंकि ये क्षेत्र मेरा नहीं है, मैं इतना इंटरेस्ट से भी नहीं सुनता था। तो देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, तो किसानों के बारे में, शुगर फैक्ट्रियों के बारे में, इनको किस तरह से व्यवसाय में जिंदा रखे और आगे बढ़ाए, इसके लिए पूरी कोशिश वो करते रहते हैं। और इसी का एक फलित हम लोग बोल सकते हैं। इथेनॉल जो आप कारखाने, जिसके पास भी कारखाने हैं, अगर एनपीए में भी है तो फिर भी अगर इथेनॉल का उनको प्लांट डालना है तो उनको बैंक कर्ज दे सकती है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया। और खांडसरी वाले भी है, हमारे महाराष्ट्र के सरकार ने पहले 15 किलोमीटर की जो लिमिट थी, 15 किलोमीटर के अंदर कोई शुगर फैक्ट्री नहीं लगाएगा, तो 25 किलोमीटर कर दी थी। उसके ऊपर भी मोहर लगाने का काम और मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने किया। अब 25 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई दूसरा कारखाना नहीं लगा सकता,
और इसी कानून में से खांडसरी जो गुड़ बनाते, जगेरी बनाते, उनको उनमें से बाहर करके अगर वो 25 किलोमीटर के अंदर है तो गुड़ बना सकते हैं, लेकिन 25 किलोमीटर के अंदर रह के वो इथेनॉल नहीं बना सकते, ताकि हमारे कारखानों के ऊपर, शुगर कारखाने के ऊपर, उनके इनकम के ऊपर कोई असर न पड़े, इसलिए ये कानून बनाया। और सबसे बड़ा डिसीजन तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारे अमित भाई ने लिया था, जो 8,000 करोड़ का आपका इनकम टैक्स का जो छूट दिया था, जो एफआरपी से ज़्यादा रेट जिन कारखानों ने दिया, उनके ऊपर जो इनकम टैक्स लगा था वो 8,000 करोड़ का इनकम टैक्स भी उन्होंने माफ करने का काम किया। ये कारखानों को जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान केंद्र सरकार का, ऐसे मैं बोलूँगा तो गलत नहीं होगा। आप यहाँ पे अभी विश्व में जो भी अलग अलग शुगर फैक्ट्री के ऊपर कुछ प्रयोग होते होंगे, कुछ नया टेक्नोलॉजी आता होगा, तो उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि अगर मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास भी 1 रुपया है, आपने मुझे 1 रुपया मांगा, मैंने आपको दिया, तो आपके पास 2 हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जो विचार होता है, मेरे पास एक विचार है, आपके पास एक विचार है, आपने मेरे से विचार मांगा, मैंने आपसे मांगा, एक दूसरे ने एक दूसरे को दिया, तो दोनों के पास 2-2 विचार हो जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी का भी ऐसा ही है। आप जिसके पास भी टेक्नोलॉजी, उनके पास जो अच्छा है उनसे लीजिए, हमारे पास जो अच्छा है उनको दीजिए। ये शुगर इंडस्ट्री है, ये जिंदा रहनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा है कि सुबह सुबह कोई किसी भी, कितना भी डायबिटीज़ जिसको होने दो, वो शुगर की चाय पीने की कोशिश करता ही करता है। तो आदमी को भले उसका शरीर को नुकसान होता होगा, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं शुगर की वजह से ही जिंदा रहता हूँ। तो ये शुगर, हमारी शुगर फैक्ट्री में काम करने वाले, हमारे शुगर इंडस्ट्री में काम करने वाले हमारे जो साथी हैं, इनकी ये जो कॉन्फ्रेंस आज 2 दिन की यहाँ पे होने वाली, इनसे ऐसा मंथन बाहर आए कि शुगर फैक्ट्री के साथ अभी इथेनॉल को जोड़ा है और कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी जोड़ के हमारे किसानों को भी उसका फ़ायदा हो, इंडस्ट्री वालों को भी फ़ायदा हो, देश को फ़ायदा हो। इस तरह से कुछ मंथन करके इसमें से कुछ बाहर आएगा तो निश्चित तौर पर उसका भी अच्छा फ़ायदा हमारे देश में और विश्व में किसानों को होगा, ऐसा मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। मुझे एक बार ऐसा बताया गया था कि जो इनकम टैक्स आपका 8,000 करोड़ का माफ हुआ, तो हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता ने, जब पी चिदम्बरम जी थे फाइनेंस मिनिस्टर, उसको कोशिश किया था शाह जी, ये उन्होंने बताया था कि ये कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये लगाया है, बराबर लगाया है, लेकिन फैक्ट्री वालों को भी इसका फ़ायदा हो और किसानों को जो फ़ायदा देने वाले हैं उनको नुकसान ना हो, ये बात ध्यान में रख के हमारे गृह मंत्री और सरकार मंत्री अमित भाई ने ये माफ़ करने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम ये आपके क्षेत्र में है, ऐसा मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। मुझे खुशी हुई आप लोगों के बीच में आके, सडनली मैं मेहमान बन के आया, लेकिन आप लोगों से रूबरू हुआ, बहुत खुशी की बात है। मैं आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके कॉन्फ्रेंस सक्सेस रहे, यशस्वी रहे और हमारे शुगर फैक्ट्री में, शुगर फैक्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी साथी हमारे आगे चल के और अच्छा टेक्नोलॉजी से इस क्षेत्र में अपनी प्रगति उन्नति करे, ये शुभकामनाएं आपको देता हूँ। अभी 7-8 दिन आया हुआ पहले नया साल जो है उसकी भी आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, ये बहुत ज़रूरी था, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपने शुरू किया। मैं नाउ रिक्वेस्ट Mr. Jitubhai Shah to kindly come forward and felicitate our guest of honor.
MOS, Mr. Kapil Patil, Ministry of Panchayati Raj, Government of India, with a memento, a token of appreciation. Thank you so much, sir, for filling all our hearts with immense happiness and unforgettable grace. Sir has a flight to catch. Thank you so much for your very precious time and worthy presence, sir. You really enlightened our conference. Thank you so much, sir. Let us have a huge round of applause, ladies and gentlemen. Our Union Minister, MOS, Mr. Kapil Patil, Ministry of Panchayati Raj, Government of India, for his presence and time. Moving forward, ladies and gentlemen, please help me welcoming on stage the co-founder of Chini Mandi and Director JK Group, Mr. Hemant Shah, with a huge round of applause. Sir will come and throw the light on day first conference of India's largest sugar and ethanol conference of 2023. जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मंच पर उपस्थित रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, मिनिस्टर साहब का शेड्यूल इतना बिजी था, फिर भी वो टाइम निकाल के उनकी उपस्थिति आज हमारे बीच में हुई। हमारे स्पॉन्सर्स, एसोसिएट पार्टनर्स, स्पीकर्स, गेस्ट, डेलीगेट्स और यहाँ पे उपस्थित आप सभी मेहमानों का चीनी मंडी द्वारा आयोजित शुगर एंड इथेनॉल इंडिया कॉन्फ्रेंस में मैं आज सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे गर्व है कि आज हम इस मंच पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ये कॉन्फ्रेंस का सेकेंड एडिशन है। लास्ट ईयर जो हमने कॉन्फ्रेंस किया था वो मुंबई में किया था, और ये कॉन्फ्रेंस करने के पीछे का जो हेतु है वो यही है हमारा कि शुगर एंड इथेनॉल इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी लोग हैं वो सारे एक साथ मिलकर हम इस इंडस्ट्री को, अपने भारत देश को कैसे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, वही उद्देश्य ये आज का जो चीनी मंडी ऑर्गेनाइज जो कर रहा है शुगर एंड इथेनॉल इंडिया कॉन्फ्रेंस, जो ये आज सेकेंड एडिशन है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि चीनी का उत्पादन कितना होगा, इंडिया चीनी एक्सपोर्ट कितना करेगा, ब्राजील शुगर सिनारियो क्या रहेगा, इनफैक्ट ग्लोबल शुगर सिनारियो क्या रहेगा, या इथेनॉल पॉलिसीज क्या होगी, गवर्नमेंट का कहां पे फोकस होगा। ऐसे बहुत सारे विषयों पर यहाँ पे आने वाले 2 दिन में हम चर्चा करेंगे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट से हम लोग सुनेंगे, उनकी राय लेंगे, और मुझे यकीन है कि आने वाले 2 दिन में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, जिसका बेनिफिट हम हमारे बिजनेस में कर सकते हैं।
अगले कुछ ही दिनों में चीनी मंडी को 5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। लेकिन ये 5 साल की जो जर्नी है, और हमें ऐसा लगता है कि ये जर्नी हमने जब स्टार्ट की है, कैसे वो 5 साल निकले हैं हमें पता ही नहीं चला। और इन 5 सालों में आपने जो विश्वास दिखाया है, आपने जो सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं चीनी मंडी की ओर से आप सभी को धन्यवाद करता हूं। ये जर्नी में चीनी मंडी ने एक मुकाम हासिल किया है। शुगर एंड इथेनॉल इंडस्ट्री में उसकी एक अलग पहचान बनाई है। जो चीनी मंडी की रीच है आज, वो 150 से भी अधिक कंट्री से यहाँ पे यूजर हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि 35 लाख से ज्यादा यूजर्स आज चीनी मंडी का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें 43,000 से ज्यादा आर्टिकल्स है जो कि 4 लैंग्वेज में है। तो ये मुकाम जो हमने हासिल किया, और जब हमने चीनी मंडी की शुरुआत की थी तो एक आदमी का सपना था, एक आदमी का विजन था। वो आप सब जानते हैं कि वो विजन जो था वो उपल भैया का था, जो कि मेरे बड़े भाई है। उन्होंने एक टीम बनाई, टीम का हौसला बढ़ाया, और ये विजन के साथ हम इस जर्नी को चलते गए। मुझे आज ये कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि 40 दिन पहले उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ। जो आज उनकी वो मेडिकल ट्रीटमेंट वो चल रही है, और उसी की वजह से फिजिकली उनकी उपस्थिति नहीं है। जब ये बात सबको पता चली, हमारे जो सपोर्टर्स है, वेल विशर्स है, उन सब ने हमें एडवाइस दिया कि ये कॉन्फ्रेंस को आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर लीजिए, और जब उपल भैया की तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद में कर लेना। ये सारी बातें हमने भैया से डिस्कशन किया। भैया ने एक ही बोला कि द शो मस्ट गो ऑन, हमें रुकना नहीं है, और जो हम कमिट करते हैं उससे ज्यादा डिलीवर करने में हम बिलीव रखते हैं, और इसीलिए चीनी मंडी आज ये मुकाम पे है। वो फिजिकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 40 दिन में इतने एक्टिव है। दिन रात उनके मन में, उनके जहन में यही बात है कि कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे, क्या अरेंजमेंट्स है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वही फुल टाइम अभी भी एक्टिव है। सिर्फ इतना ही है कि पूरी चीनी मंडी टीम हम आपको मिस कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि चीनी मंडी आज भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा न्यूज एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल फॉर शुगर एंड इथेनॉल इंडस्ट्री बन चुका है। पिछले बार जब हमने मुंबई में कॉन्फ्रेंस फर्स्ट टाइम जब हम कर रहे थे तो टोटल 450 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ थे।
पिछली बार जब हमने मुंबई में इसका जब आयोजन किया था तो 450 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ थे। जब हम इस कॉन्फ्रेंस की जब शुरुआत करने जा रहे थे तो वही उद्देश्य, वही काउंट को ध्यान में रखते हुए इसकी अरेंजमेंट्स की हमने शुरुआत की। लेकिन आप लोगों का जो प्यार मिला है, आप लोगों का जो रिस्पॉन्स मिला है, आप लोगों का जो सपोर्ट मिला है, उसके चलते आज यहाँ पे हम 600 से भी अधिक पार्टिसिपेंट्स हम यहाँ पे मौजूद हैं। और मुझे यकीन है कि अगले साल इससे भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को हम शामिल कर पाएंगे और उसके लिए चीनी मंडी की पूरी टीम हम तैयार है। जैसे हमने ये शुगर और इथेनॉल इंडिया कॉन्फ्रेंस का जैसे हमने शुरुआत की, सो आज मैं आपको और एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। एक नया इनिशिएटिव की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है शुगर एंड इथेनॉल इंडिया अवार्ड्स, जिसमें शुगर एंड इथेनॉल इंडस्ट्री से जितने भी लोग, जितनी भी कंपनियां थैंक यू। सो इसमें शुगर एंड इथेनॉल इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी लोग, जितनी भी कंपनियां जिनका योगदान है, उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं। और इसकी जो पूरी डिटेल है या पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो आने वाले समय में आपको मिलता रहेगा। मैं फिर एक बार चीनी मंडी की ओर से, जेके ग्रुप की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्फ्रेंस का अनुभव आपका बेहतरीन हो। धन्यवाद। Mr. Shah, for those kind words. Let us have a huge round of applause for our organizers, Chini Mandi, ladies and gentlemen. Now, may I have this opportunity to call our distinguished speakers who are on dais to speak a few words. Let us now start with the Director of Regreen Excel, Mr. Ashutosh Singh. Please express your feelings and gratitude for today's event, sir. Thank you. मैं आशुतोष सिंह, निदेशक रिग्रीन एक्सेल ईपीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से और एक्सेल परिवार की तरफ से यहाँ पे मंच पे उपस्थित हमारे गेस्ट जॉइंट सेक्रेटरी सुबोध सिंह साहब का, जेके ग्रुप के चेयरमैन जितूभाई साहब का, केबीके के ईडी सिंह सर का और आप सभी महानुभावों का देश की राजधानी में स्वागत करता हूं। आप सभी देश के सभी कोने कोने से आए हैं। जो दिल्ली और नॉर्थ के रहने वाले हैं उन्हें तो इस ठंड की आदत सी है, लेकिन जो महाराष्ट्र और साउथ से आए हैं उनके लिए ये अच्छा सौगात है कि आप भी इस दिल्ली की ठंड का मजा लीजिए। रिग्रीन एक्सेल पिछले 9 साल से, और जो जानते हैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन मिस्टर संजय देसाई, उन्होंने इस इथेनॉल इंडस्ट्री में मोर देन 25 इयर्स अपना सब कुछ दे दिया है। और आज रिग्रीन एक्सेल को हम लोग इस मुकाम पर लेके आए हैं जहां पे 100 प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है और मोर देन 20 प्रोजेक्ट्स अभी ऑनगोइंग चल रहा है। हम देश की एकमात्र और पहली कंपनी है जो ईपीसी प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ पे जितने भी महानुभाव हमारे सहयोगी हैं वो सभी जानते हैं और हमसे कहीं ना कहीं किसी रूप से जुड़े हैं। हमारी कंपनी में मोर देन 500 इंजीनियर्स और एसोसिएट्स हैं जो दिन रात
आदरणीय प्रधानमंत्री के इस सपने को, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में देश के कोने कोने में इस प्रोजेक्ट को दिन रात हर परिस्थिति में लगाने के लिए उत्साहित है और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि अभी सुबोध सर बताएंगे भी कि इस देश में अभी 1300 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत है, जहां पे अभी हम लोग लगभग 850 करोड़ लीटर का ही उत्पादन कर रहे हैं और 2025 तक का हमारा लक्ष्य है कि हम 10% इथेनॉल को हम अचीव कर सकें। सो उम्मीद करता हूं आप सभी के मदद से, आप सभी के सहयोग से और जितने भी सीनियर्स हैं इस इंडस्ट्री के, उनके मार्गदर्शन में, चूंकि इस इथेनॉल इंडस्ट्री का टॉपिक यही है, एक्सप्लोर, इनोवेट एंड सस्टेन। सो हम अगले 2 दिन तक इस इंडस्ट्री के सभी महानुभावों से इसी 3 सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, सुनेंगे और यहां से एक उम्मीद लेके जाएंगे, एक निश्चय करके जाएंगे कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, सपना है कि इस देश को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे इस ऑयल इंडस्ट्री में, उस चीज को हम करेंगे। और मैं यहाँ पे इस मंच के माध्यम से शिवानी, हेमंत की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले बार हम लोग मुंबई में मिले थे और उनका पहला एडिशन था। मुझे आज भी याद है कि मैं शिवानी से मिला था मुंबई के पुणे ऑफिस में। उसने बोला था कि सर ये करना है। मैंने बोला कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं और यही विजन हमारे चेयरमैन का है। उन्होंने हमेशा से युवा पीढ़ी को हमेशा प्रमोट किया है। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं। मैं 2010 में संजय देसाई जी को मिला था और उन्होंने बोला था कि आशुतोष, इस इंडस्ट्री में करने के लिए बहुत है, तुमने देश की सेवा की है, ये देश की सेवा का ही काम है। इस देश को इथेनॉल, हम अपने इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाएंगे, इकोनॉमी बढ़ाएंगे। और मैं पिछले 12 साल से उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन में, उनके दिखाए हुए रास्तों पे पूरे टीम को लीड कर रहा हूं और आशा करता हूं कि 2023 हम सभी का अच्छा जाएगा और आप सभी को और आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Singh. You said it less, but you said it all. Thank you so much. Now with this, let us now welcome the President SISMA and Executive Director Shri Renuka Sugars Limited, Mr. Vijendra Singh, on the podium to tell us that what is his exploration about day first. So, good evening everyone. Dignitaries on the dais and fellow members and audience. This conference, sugar ethanol, I think we should reverse it, ethanol to sugar. Because sugar has come a savior for the sugar industry in last 4-5 years. Though we are struggling last 20 years, but really taken up last 4-5 years where we are producing more ethanol, we are producing more ethanol to the government. And the country as a whole we achieved 10% blending already. And last time we supplied about 30 crore litre of ethanol. But this is a beginning. To me, ethanol has a potential to go 1.5 billion or 1500 crore also, which is 5 times where we are, 4 to 5 times where we are stand today. And once this program fully implemented, Indian sugar industry will have a balance between sugar and ethanol. The last 20 years, since our memories, we have been struggling with one problem: higher the production, lower the consumption. So we have what to do with the excess sugar. Carry in the godowns, sell it at discount, try to export it. Export obviously not economical. So finally, we discovered the solution, green solution. And by this solution, we have all advantages. We have the green fuel. We solve the excess inventory problem. With the proactive and progressive policy of the government of India, they found a great solution that price of ethanol become commercially attractive. As a sugar producer, you have 2 options. Produce sugar, keep it in warehouse, sell it for after 12 months, 8 months, 14 months, depending upon this crop situation. Or produce ethanol, supply at a good price, supply immediately with a cycle of 2 months and maybe 2 months, 3 months, depending, 1 month also at times.
So I think we should thankful to the government of India for all progressive and proactive policy they adopted about ethanol. And on the national level also, it is solving a great problem of fuel security. Fuel security become very important aspect world over. So we are solving that problem also, besides being green fuel. And if the policies and industry work together and continue to have same speed, pace what we had today, I think soon we had 20% blending, maybe 30% also. We never know. Just to give an idea, right now our capacity is about 2 crore litre per day. And current expansion is going to, the license already approved and funding already tied up. The capacity will become 6 crore litre per day. So 3-time jump is possible in the industry. You can imagine the kind of investment industry doing, kind of program we are doing, and ultimately once it is achieved, what benefit country as a whole, industry in particular will have. So we should be thankful to all stakeholders working hard, industry, government, employees, EPC program, EPC suppliers. By the way, I am MD of KPK also, which is EPC supplier. I don't want to talk this subject now, it's a separate subject. Thank you very much. Thank you for the Chini Mandi team, Shivani, Jitubhai, Mr. Shah. You are doing a wonderful job. And you're creating an environment where a lot of interaction, knowledge sharing is happening. Thank you very much. Thank you. Bye. Have a good time. Thank you so much, sir. Those were some wonderful words which came from you. Now, let us please invite on the podium the CEO, Dalmia Bharat Sugar Industries, Mr. Pankaj Rastogi, with a huge round of applause, ladies and gentlemen, to say a few words. A very warm welcome, sir. Good afternoon, everyone. Mr. Subodh, Kumar Singh, dignitaries on the dais, off the dais. I take this opportunity to thank Chini Mandi and also congratulate them for holding this I think the first edition I was not able to attend, but from what I heard from my colleagues that it was a very successful event. I wish that the second edition is even more successful. So thank you, and I was just looking at this map where it says that the conference powered by KBK, and I'm just reading out the name, and co-powered by Dalmia Utsav. But what comes to my mind is a map of the industry as it is today, where we say Sugar and Ethanol India, powered by Government of India and co-powered by the industry players. Government of India really, because of their supportive and progressive policies, has really powered the industry, where the business model has changed. If we go back a few years, 5 to 10 years, the percentage of revenue and the percentage of profits which were coming from sugar, distilleries, from cogen, the picture has completely changed today. There is, the companies to companies, the picture can differ, but overall as an industry, there is a quantum shift, there is a quantum jump. So, this is something which has been a turnaround. I call ethanol blending program in 2 phases. There was the first phase. The Government of India does not call it 2 phases, but there was the first phase which was not so successful. But the second phase has been really successful, which has largely been driven by the correct set of progressive policies, the right quantum of support and help, easy finance provided, concessional finance provided. So this is something which has been a turnaround for the industry. And as Mr. Vijendra Singh said that maybe we change it to Ethanol and Sugar India. So sugar industry, we look at Government of India climate goals, the net zero goals. Sugar industry has got a large part to play in achievement of these roles, whether it is from ethanol, whether it is from cogen or other green energy sources. There is a whole lot of possibilities which are open. So I think if the government and industry work together, the possibilities are infinite.
And time we can be an important contributor. The entire industry can be an important contributor to all the net zero goals of the government of India. So, without further ado, I think all of us would like to hear Mr. Subodh Singh. So proudly. Thank you, sir. Thank you so much, Mr. Rastogi. While you were speaking, kind of unique energy got spread. Thank you so much for that. Now, ladies and gentlemen, comes the keynote address. To deliver the keynote address, please help me welcoming with a huge round of applause the Additional Secretary, Policy and FCI, DFPD, Mr. Subodh Kumar Singh. A very, very warm welcome, sir. Please take the charge. Guests on the dais, Shri Pankaj Rastogi ji, Shri Jitubhai ji, Shri Ashutosh Singh ji, Shri Vijendra Singh ji, friends from industry, various stakeholders, technology providers, friends from ISO and so many other organizations. A very warm good afternoon to all of you. I'm very happy to be here in this conference, Sugar and Ethanol India Conference 2023, organized by Chini Mandi, and this is their second conference. Last was in Mumbai, and if you see the audience, it's a great success, and the hall is packed, though it is like post-lunch session, still it is with full energy, and the whole presence speaks about that. So, talking about what Mr. Rastogi said, how the sugar sector has reformed in India, it's a great success story, which just 4 or 5 years back, sector was in trouble, and the rates of sugar was so down, the industry were not able to make payment to the farmers, and so many other issues were there. And in just 4 years, how the industry and government together, they have reformed this sector, and now the sector is on its own feet. So it's a very remarkable thing that this has done. Like in this century, if we see the first decade of this century, the Indian sugar scenario was very cyclical in nature. 2 years surplus, 1 year deficit. Sometime we used to export, sometime we used to import the sugar. But in the second decade, I think from 2011, it is generally we were surplus throughout the decade, and except in 1 year, 2016-17, when there was drought in large part of country. In that year, there was production was less than the consumption. So, but by and large, after that, the sugar production is very good, and we have become a structurally surplus sugar country. And due to that surplus sugar, because we pay FRP to the farmers, in some states they have SAP, and this is the cost is so high, because if we compare to other parts of the world, the our cane cost is high, and the export scenario was not good. The cost of production was high, international market rate and domestic market rate both were low. And then the industry and government of India, they came together, and first time I think industry talks about that, let us regulate us. Generally industry talks that industry should be deregulated, they should be free. I also feel that it's always that deregulation should be there, but how this formula has changed the sector, that their system of monthly limit quota was introduced, and minimum selling price of sugar was introduced, and then government of India provided buffer subsidy so that limited stock is available in the market, so that it's not market doesn't crash below a level. And the most important things which were done to liquidate these stocks, that is the giving assistance on export of sugar, and assistance about setting up distilleries, and how we can divert more and more sugar cane towards ethanol.
So this strategy of liquidating the stocks through exports and ethanol, this has become a game changer, and what we see today, I think this is just because of these two important schemes. So if we talk about exports, initially we gave assistance for 3 years, and then international market has developed in such a way that now the demand of the international market cannot be met without Indian sugar. So now you guys are the dictating position, and this year, if we see, the rates are guided by the Indian sugar industry, and the export rate is much better than the domestic rate. So you are giving benefit to the domestic consumers also, that you eat sugar at low rate and earn revenue by exporting sugar. So in last 3-4 years, like 18-19, we exported about 4 million sugar, then 6 million, then 7 million, and last year we exported about 11 million ton of sugar, which is a record, and now we are like second largest exporter of sugar in the world. So, and second important thing is that the ethanol thing, which earlier we used to divert only C molasses, like in 2014 only 1.5% blending was there, only then we used to have only C molasses, but from 18-19 the new biofuel policy was introduced, and the use of B molasses, sugarcane juice and grains also introduced, and with that the blending percentage gone up, and like in 1920 it was 5%, and in just 2 years last year we achieved 10% blending, which is in 2 years time achieving from 5 to 10 is a remarkable achievement, and we plan to achieve 20% in next 3 years. So the targets we have set are very high, and like the sugar diversion, who just 3 years back it was 9 lakh ton sugarcane was diverted towards ethanol, then 22 lakh ton, and last year it was 36 lakh ton, and this year we are expecting 45 to 50 lakh ton of sugarcane will be diverted towards ethanol. So it's a good like a game changer, and by 25 we will be needing about 1300 crore liter of ethanol, 1000 crore for blending, and 1700 crore liter capacity is required. So already we have set up about 1000 crore liter capacity, and 700 crore liter is to be added in next 3 years. So this is a good like target that all the technology providers, they have good amount of equipments to supply, and so that in this minimum time we can achieve 700 crore liter of this. So overall, the sugar industry has become a good energy industry now. By having sugar, the human got energy, but other than this human energy, if we talk about other energy, which is like replacing the other coal and fossil fuel energy, about 7,500 megawatt already they have set up as cogeneration, and the next is going to be ethanol, which like in next 3 years about 650 crore liter or 700 crore liter ethanol sugar industry will be supplying, and the next which is in pipeline is the CBG from press mud, like for time being you are using as agriculture manure in the fields. So this also has potential to produce CBG, and some sugar plants have already set up this CBG units. I request all the sugar mills who are not having distillery and the cogen and the CBG plants, they all should have, so that you have good value from the byproducts, and overall revenue from your campus is the best. So even if some sugar mills like cooperative sugar mills and some private sugar mills are also finding difficulty, you can go like government does PPP type of projects. You have asset, so you can ask someone to invest on your behalf, and they run it for 20-30 years, and then after that time they can hand it over to you. So that is also a model, and 1 or 2 industries have already tried this model, that they could not set up the distillery, so someone else had set up the distillery in their campus.
So with this, I think our scheme is also there, interest subvention scheme for ethanol setup, and that is you can submit the applications till I think 21st April, and OMCs are also extended, signed, they have tripartite agreement, we have extending facility for grain-based distilleries also. And the other thing is that many industry, particularly in a state like Karnataka and Maharashtra, they are doing this juice to ethanol, which is very good, but they are not able to run their distilleries throughout the year. So if they can convert the distilleries to dual feed distilleries, that during cane pressing and whatever molasses you have, you can run on the molasses, then you can run on the grain. So your distillery should run throughout the year and produce maximum ethanol, whatever investment you have done, you can recover the maximum amount from that. So with all the steps of sugar export and ethanol, like this year, we allowed 6 million ton export, and already almost 6 million ton is already contracted, and export is going on at a great speed. And with this, last year about total sugar cane purchased by the sugar mills was the tune of 1.18 lakh crore, which was the highest, and almost except I think 2,000 crore, all the cane payments have been done. So this cane payment has been done in a record time, and so round of applause for all of you. And other thing in the ethanol is so many people talk about that whether like government is promoting EV, what will happen to ethanol. So ethanol will also continue. I think the sale of petrol last ethanol year was more than the expected. And this year also what was estimated, it is going to be more than that. So that means the people are buying vehicles at a speed which was, the economy is doing well, and so everything is online, and for next 20-30 years the growth of these IC engine vehicles will also increase, and EV will also increase. So, and we are going to have flex fuel vehicle also, like two-wheeler flex fuels. The auto industries are maybe here, they are introducing from 24, and four-wheeler flex fuel vehicle will be introduced from 25. So actual blending in just I think by 2030 we will be having more than 20%, maybe in the range of 25-26%, because with flex fuel vehicle the actual blending will increase. So this is also a good development, and from 1st April 23 all the vehicles will be E20 material compliant, and from 1st April 25 all the vehicles will be engine wise also E20 compliant, so they will give best of the performance. So we will continue to have a good potential of ethanol, so let us expand and set up more and more distilleries. It's a good, like this ethanol is renewable fuel, green fuel, and it also boosts agriculture through this like about 60 to 70 lakhs ton equivalent sugar cane we will be diverting, and about 165 lakh ton grain will be diverted towards ethanol. So it will help provide lot of help to the farmers, additional market to the farmers, and it also improves the environment. So all of you are doing good work in that direction. So my request is that you set up your projects, whatever difficulties you are facing from any of the government side or any other organization, whatever we can, like we have portals for that. So we are very ready to like help you if you are having any in getting approvals or any difficulty in doing that. So juice to ethanol, so many people have already started, but in the long run, if we want to provide 600-700 crore liters, we have to go for juice to ethanol also. And this has lot of benefits. Benefits in the sense because you just crush the cane, supply ethanol to the OMC, you get the money. So your working capital requirement is almost zero. If we see the working capital loan taken by the sugar industry in last few years, it is coming down, though we are procuring more and more sugar cane. So because of ethanol, because of exports, like 60 lakh ton sugar you export in 3-4 months time, so you get the money and your
funds requirement get reduced significantly. So these are the things which are improving the sector, and how we can reduce the logistics cost throughout the country, because sugar mills are located from north to south. So one thing we introduced that swapping of domestic quota with export quota, so that sugar from UP goes to port, and from Maharashtra side it comes back to Madhya Pradesh like for domestic sale. So this can be eliminated. So this is one thing, and other thing is that the government also has this PM Gati Shakti Yojana, Prime Minister Gati Shakti program. So if there are gaps relating to railway siding, the mills are not having railway siding to a longer distance, so those can also be set up. So if somebody is interested, industry associations can also take a lead, and if there are no railway siding in a long distance, those can be set up. India is, everybody knows that this year we are having presidency of G20, so this is also a proud moment for all of us. And the logo also provides that the Vasudhaiva Kutumbakam feeling, so India can provide good support to the neighboring country in supporting their ethanol program, sugar industry, improving their sugar industry. So we can have collaboration. I told in the ISO conference also, country to government, industry association to industry association, academic institute to academic institute. So those things can, those type of help can be provided to neighboring and other countries if anyone is interested. So this is what I wanted to say. So I thank organizers, Chini Mandi, for organizing this beautiful conference. I wish that this conference gets a good success, and whatever deliberations will be held today and tomorrow, those will be benefit the sector, and if anything issue is related to the government, please let us know also. So thank you very much. With this, ladies and gentlemen, please help me asking Sir, the founder, chairman, JK Group, Mr. Jitubhai Shah, to kindly come forward and felicitate all our distinguished speakers with a memento as a token of regard and respect. Let us start with our Director, Regreen Excel, Mr. Ashutosh Singh. We have with us Director, Regreen Excel, Mr. Ashutosh Singh. Moving forward, it's time to honor the President SISMA and Executive Director Shri Renuka Sugars Limited, Mr. Vijendra Singh, sir. Without further ado, let us now felicitate with a memento to the Chief Executive Officer. It's time to gracefully present and very gratefully present the memento to our keynote speaker, the Additional Secretary, Policy and FCI, DFPD, Mr. Subodh Kumar Singh, sir. Ashutosh sir has a question from Mr. Subodh sir. Over to you, sir. Hello. It's all. They are very much in panic mode right now. So 15th Jan was given from the oil industry for the commissioning of their plant and the production. And as per the tripartite agreement,
out of 65, only 6 are able to achieve this date. And rest all have been told that your EOI will be cancelled after 15th Jan. So they are just in a panic mode and continuously calling to all the manufacturers, and same goes to all the associates also, those who are working for their project side. So from this association and from this stage, I would like to request sir, so please look into this matter, as this is very, very serious matter, and all the investors, their crores of rupees are on stake. So they are thinking that if the EOI will be cancelled, then what they are going to do. And same, the bank is also behind them, that whatever the payment they have disbursed them, so what is going to happen after 15 Jan? So I just want you to please intervene and take this with the oil industry, oil ministry, and please resolve this matter, sir. We will look at this. And we will take up with the Ministry of Petroleum. Thank you so much. Let us now have a group photograph. May I now request all our distinguished guests on the dais to rise and kindly come in front of the stage.